Foley is everyday sound effects which are added to films or any other media in post production to enhance the audio quality. Like washing machine का स्विच है ऑटोमेटिक जो खराब हो गया था, तो उन्होंने ला के दिया था, वो उनकी फिल्म में वो यूज करना था क्योंकि उसमें कुछ एक मशीन का साउंड था, तो फिर वो इससे क्रिएट किया था हमने ये। वो जो चाबी देने के बाद में वो कट 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 एक मशीन का साउंड आता है ना, उसके लिए हमने यूज किया। उसमें हम लोग ये घुंघरू यूज करते हैं। और अभी जैसे लैच है, लैच जब भी खराब होता है घर का तो हम लोग फेंकते नहीं है, रद्दी वाले को देते नहीं है, क्योंकि ये हम लोगों को गन की साउंड में काम आता है। लोडिंग वोडिंग रियल गन आती है, हम लोग मंगाते हैं, लेकिन उसको गिरा नहीं सकते आप, और कुछ कुछ फिल्मों में नहीं भी आती तो हम लोग यूज करते हैं। अब ये जैसे ये कार का एसी है खराब हुआ, उसका आगे का जो पार्ट होता है, अब इसमें स्क्रीचेस बहुत अच्छे आते हैं। इसको जब मैं टेबल पे रखूंगा आपको दिखेगा कि नहीं पता नहीं, आई डोंट नो। हाँ ये है, तो इसको जैसे मूव करोगे रस्सी का साउंड है, तो रस्सी का करोगे तो इतना कुछ आता नहीं है, तो उसमें हम लोग ये कोल्हापुरी चप्पल ऐड करके करते हैं। तो ये जो आपने बाहुबली में देखा था जो प्रभास लटक के नीचे आ रहा है, तो उसमें जो स्क्वीक है रस्सी का वो इससे दिया हुआ है। लिप साउंड, किसिंग साउंड्स है, वो सब हम लोगों को करना पड़ता है क्योंकि वो आर्टिस्ट वहां पे देता नहीं, तो वो देना पड़ता है। There is no Foley institute to teach you proper Foley. Yeah. So if you want to learn Foley, you have to assist a Foley artist. In Indian cinema, of course, they have to join an sound institution. So that will also happen. Once they finish their graduation, then they have to go 3 years course for sound. And when they learn sound there, so they won't learn Foley there. They'll learn the entire sound craft. So when they come out from there, they are a trained sound engineer. तो मैं तो जब ब्रश करता था सुबह, तो कोई ना कोई सेलिब्रिटी आता रहता था स्टूडियो में, तो हम लोग को सेलिब्रिटी कभी एक्साइट करते ही नहीं थे। 5 years or maybe even more, that all depends. If you are so passionate about the sound, creating sounds from Foley artists, they have their own Foley props bank, which is collected over the years. It's a everyday learning process. It's not, even if I'm a trained artist, I'm still learning. I am one of the best, so I can do any kind of film you give me. I didn't, but of course the new guys who are willing to come or already come, they are struggling. We see the film and we decide on the budgets, like, okay, this film will take so many hours, so the studio money would be this much, and food and refreshment will be this much, the Foley artist fees will be this much, and miscellaneous will be this much. So we'll give one figure, like to say it starts from, you can say 1 lakh to it can go to 10 lakhs also. It all depends on the film. कम से कम 100-200 शूज पड़े, अभी उसमें से अगर मैं बोलूंगा अगर वो शूज लेके आ, तो कौन सा शूज लेके आएगा वो? तो कुछ शूज हैं स्पेशल जिसमें नाम हमने दिए हुए हैं, एक्टर्स के नाम पे है वो शूज। सिंघम है, हरमन है, कोई ये बिपाशा है, करीना है, ऑफ कोर्स क्रिश 3, और उसकी लाइब्रेरी आपके पास में है, तो आप कोई भी फिल्म कर सकते हो। इतने सारा एक्शन हमने उसमें किया है। उसमें कम से कम 10 से 15 हजार साउंड इफेक्ट्स होंगे।